Now, how to prepare yourself at this moment? For example, when you are not experiencing any stress, that in times of stress, I need a bank account. You have a monetary bank account to handle any type of financial crisis or financial needs, if not crisis. In the same way, you need a bank account, academic bank account, emotional bank account, spiritual bank account, so that you can withdraw from that account and handle stress when it comes. What is that academic bank account? Your IQ should be high, intelligent quotient, that you think rationally, you act purposefully, and you deal with the situation in a way that is very effective. That is your IQ. Develop your IQ well. That will help you as a weapon against stress. Second is your emotional quotient. Understanding people, understanding yourself well is emotional quotient. More connectivity with people, better you will be resourceful to handle stress. Third thing is spiritual quotient. Now this is very important. I suggest a book to all you professionals and businessmen today. The title of the book is Spiritual Intelligence, Why It Matters More Than IQ and EQ. Spiritual Intelligence, the ultimate intelligence, written by Ian Marshall and Dana Zohar. They co-authored this book. They write in this book that a person should develop these 8 qualities that he becomes spiritually healthy. The spiritual quotient. I will not go into the details of this 8 habits or the 8 values and virtues. I'll just name it out for you. If you possess this, you are spiritually healthy. In this book, the authors write, first quality is flexibility. Flexibility to change is intelligence. The new intelligence definition put forward by Harvard University. New definition of intelligence. Flexibility to change, adaptability to change is intelligence. Second is self-awareness. Where am I? What I am talking? Who are the people around me? How am I expressing myself? What are my attitudes at the moment? All this, good consciousness upon all these expressions is your self-awareness, so that you never make a private or a public mistake in your life. That means you are spiritually healthy. Third value of spiritual quotient is an ability to face and use suffering. बहुत अच्छी बात लिखी है. Ability to face the suffering and use the suffering. कोई ऐसी बात आई, दिक्कत आई, तकलीफ आई, दुख आया, तो आप सामना भी कर सकते हो और उस दुख का उपयोग करते हुए आप अपने मिशन को आगे भी बढ़ा सकते हो. The top guy, the top man in our country has this ability to face and use the suffering. Faces the suffering and uses the suffering to convert it into a giant vote bank. Is a very big quality. Fourth quality. See, these are all the resources and weapons that you need handy. 24/7, 365/80. मैं क्या बोला पता चला? 24/7/365/80 is 24/7 के शॉप्स तो आपने देखे. By 365 is around the year. By 80 is 80 years of your life. 24/7, 365/80, you need these weapons handy. तो fourth quality है an ability to be inspired by vision. आप कुछ देखें और आपको पता, मन में कुछ ऐसा विचार आए, ऐसी सोच आए कि क्या इसका मैं उपयोग अपने मिशन के लिए कर सकता हूं. Inspired by vision. Fifth quality is an ability to cause as little harm as possible to yourself, to your surroundings, to people around you. Sixth quality, an ability to see connection between diverse things.
सेवेंथ क्वालिटी और एट्थ क्वालिटी अद्भुत है। सेवेंथ क्वालिटी है एन एबिलिटी टू आस्क एंड प्रॉब फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, और एट्थ क्वालिटी है एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट अ कन्वेंशन। So these are the 8 qualities. If you possess, you are spiritually healthy. And if we don't, or we possess it less, we must try to possess it more. So develop your IQ, develop your EQ, and develop your SQ as well, so that you are quite healthy to face times of crisis, times of stresses, and that makes you more healthy. This is work related part. Sometimes stress comes from people around you, in your relationships. वो काम से भी बड़ा स्ट्रेस होता है, हाँ या ना? काम से बड़ा स्ट्रेस संबंधों का होता है। संबंध कहाँ टूट गए, कोई तकलीफ आई, रिश्तेदारी में आई, डिवोर्स हुए, कुछ हुआ तो स्ट्रेस लाइफ टाइम रहता है। How to handle stress that props up from relationships with people. बहुत अच्छी बात स्टीफन कॉवी ने द 8th हैबिट में लिखी है। स्टीफन कॉवी, द ऑथर ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, he writes the new book the 8th habit, subtitled from effectiveness to greatness. इस पुस्तक में वे क्या लिखते हैं? The gist of it. When he came here in 2006, he did 4 seminars in India, in 4 metro cities. 23,000 rupees per delegate fee, and the e-ticket opened 24 hours before the event, and about 700 tickets at Mumbai Oberoi got sold in just 85 seconds because the name was big, Stephen Covey. पूरे दिन का ये सेमिनार था। दूसरे दिन डीएनए ने रिपोर्ट किया था कि इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, रीड दिस आर्टिकल, एंड इफ यू डोंट हैव द टाइम टू रीड दिस आर्टिकल, रीड दिस बॉक्स आइटम। उसमें सारी बातें आ गई इन वन लाइन, विच स्टीफन कवी रिपीटेडली सेड, आई एम शेयरिंग इट विथ यू नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। स्टीफन कवी सेड, नाउ लिसन केयरफुली, how to handle stress when it comes to stress from relationships and people. Stephen Covey said, don't expect others to change. First change yourself. Accommodate yourself to them and they will change then. So don't expect others to change. Change yourself, they will follow. Stress कहाँ आता है? वो व्यक्ति मुझे अनुकूल नहीं है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं कितना अनुकूल हूं उनको? वो पहले तो आप ट्राई तो करें एक बार। पहले एक बार आप वो तो ट्राई करें कि मैं उनको अनुकूल होने का प्रयत्न करता हूं। That person also wants relations with you, so he will try to accommodate himself as well. बहुत अच्छी बात स्टीफन कॉवी ने लिखी है कि 7 हैबिट्स तो इफेक्टिव है। 7 हैबिट्स क्या है? ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और 8th हैबिट के बारे में क्या लिखते हैं? फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। रिलेशनशिप की बात ये होती है। हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज 1984 में बेल्जियम पधारे थे। वहां डॉक्टर शाह के घर उनका निवास था। डॉक्टर शाह ने उनको पूछा कि स्वामी जी, when we meet people and we know more about people, the positives and negatives, then whenever we meet them, we always see them from that negative aspects. ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया था, ये झूठा, ये वो XYZ। चर्चा भी वही करते हैं। देखो, हम लोग की चर्चा में ज्यादातर लोग होते हैं, देखना। तो मैं आपको एक बात बताऊं। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, एंड चीप माइंड्स दे डिस्कस पीपल। आप अंतर्दृष्टि करके देख लेना कि आप ज्यादातर समय किसका डिस्कशन करते हैं? वो ऐसा है, वो ऐसा था, उसने ये किया। यू आर डिस्कसिंग पीपल, यू आर अ चीप माइंड। स्ट्रेस आएगा,
जितना जरूरी है उतना जान लो, डिस्कस आइडियाज एंड डिस्कस इवेंट्स, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। डॉक्टर शाह ने प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि हम तो यही स्पेक्स पहन के सभी को देखते हैं, लेकिन वी हैव सीन दैट यू मीट एन नंबर ऑफ पीपल, बिकॉज प्रमुख स्वामी महाराज हैज मेट मोर देन 4 million people, 40 lakh people personally in his lifetime, traveling to 3.5 lakh homes personally, sat with those families.